Our first meeting was over, the time was completed, and this is our second meeting. We was discussing about the algebraic function. We was discussed polynomial function. So this is nth degree polynomial. It is nth degree polynomial because p of x is equal to a n x raised to power n. The degree of a polynomial is the number which is stated in the power, which is maximum number stated in the power of variable. जो वेरिएबल की पावर में मैक्सिमम नंबर स्टेट किया जाता है वही उसकी डिग्री कहलाता है. सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x की मैक्सिमम जो पावर आ रही है वो n है. सो दिस इज nth डिग्री पोलिनोमियल. वी कैन से दिस इज nth डिग्री पोलिनोमियल. एंड अ लीनियर फंक्शन which is expressed over here, y is equal to 3x plus 4. यहाँ पर x की पावर 1 है, so 1 is the maximum power contained in this equation. So this is linear function, a type of linear function. So we can move into our further studies. So this could be identity function. So identity function mapped on to itself. 1 1 पे मैप करेगा, 2 2 पे मैप करेगा, 3 3 पे मैप करेगा. So identity function is another type of linear function. So this was the definition. So you need to write, so you need to know about the definition. Identity function is a function which mapped elements into itself, जो कि एलिमेंट्स को उन पर ही मैप करता है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. सिमिलरली वी हैव अ कांस्टेंट फंक्शन. सो फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन कोडोमेन और रेंज. अगर डोमेन के हर एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही फिक्स्ड एलिमेंट हो रेंज के अंदर, सो दिस इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट फंक्शन. दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन. सो यू नीड टू know. And we have studied rational function. This is a rational function, a function expressed in the form of p over q, where p and q are the polynomials, is called rational function, and q of x must not equal to 0. So this is the condition of rational function. So you need to know every p over x type function is called rational function with q is not equal to 0, and both p of x and q of x are polynomials of any degree. इसके बाद इन लोगों ने सर्कुलर फंक्शंस को डिफाइन करना शुरू कर दिया है, जो कि बनते हैं हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी आवर डिस्कशन. सो अलजेब्रिक में हम लोगों ने पोलिनोमियल्स पढ़ लिए, रूट फंक्शन पढ़ लिए, रैशनल फंक्शन पढ़ लिए. इसके बाद हम लोग सर्कुलर फंक्शन पे आते हैं. सर्कुलर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगो फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन. ट्रिगो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंड इन्वर्स ऑफ these functions and hyperbolic function which are sine hyperbolic, cos hyperbolic, tan hyperbolic, similarly secant, cosecant and cot hyperbolic. Similarly we have defined the inverse functions of hyperbolic, which are sine hyperbolic inverse, cos hyperbolic inverse, tan hyperbolic inverse and many more, which are secant, cosecant and cot. So 6 functions of sine trigonometric function, 6 function of trigonometric inverse function. Similarly have 6 hyperbolic and 6 inverse hyperbolic function, which are given over here, trigonometric function sin x, cos x, tan x, cot x. Inverse trigonometric function sin x, cos x, tan x, and these are the 3 functions. And hyperbolic functions are also expressed over somewhere here, hyperbolic and inverse hyperbolic. You can see that the hyperbolic functions and the inverse hyperbolic functions sine, cosecant, cot, साइन सेकंड कॉट टेंजेंट, और ये इनके आइडेंटिटीज़ हैं. साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स बाय 2. कॉज हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेस पावर एक्स प्लस एक्स रेस टू पावर प्लस एक्स ई रेस पावर माइनस एक्स बाय 2, and tan cot. So you need to know the
identities. These are fundamental identities which are also expressed over here. सो आपको इनको याद करना है, इनको आपको याद रखना है. सो इन आइडेंटिटीज़ को आप लोगों को याद रखना है. सो दिस वाज द सर्कुलर फंक्शन. Lastly, we will define the transcendental function, which are expo and trigonometric function. Exponential function and trigonometric function. Exponential functions are expressed over here. Here, exponential, a function in which the variable appears in power. एक फंक्शन ऐसा जिसमें पावर में वेरिएबल अपीयर होगा, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस 10 है, 10 की कोई पावर वेरिएबल बना है, सो दिस इज़ अ कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अगर बेस ई बन रही है, सो दिस इज़ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अगर कोई बेस अदर देन 10 और ई बन रही है, सो दिस इज़ जर्नल. सिमिलरली वी हैव लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है, अगर ए is equal to x is equal to a raised to power y है, then y is equal to log of x with base a. So this is a logarithmic function. We can see that, okay, we was studying about our logarithmic function. Here we have 3 types of logarithmic. 2 are stated in your book, which are common logarithmic function and natural logarithmic function. If the base of log is 10, then it is said to be common. If the base is e, then it is natural. If the base is other than e or 10, then it is a general logarithmic function. So that was the logarithmic function. We have studied the by application. Now lastly, we will define our expressed form. A function can be lastly defined as in the form of expressed form. Here we have 2 types: explicit functions and implicit function. Explicit function are stated over here. Explicit functions are those functions which are dependent on only one variable. Here y is equal to x square plus 2x plus minus 1. So this function is depends only on x. Here y is equal to square root of x minus 1, which is also depends on one variable. So those functions are explicit functions which are depends on only on one variable. Y is equal to f of x. So it depends on only x. This is explicit function. If a function is depends on more than one variable, then it is said to be implicit function. Here you can see that these both functions are the dependent variables of x and y. Then this function can be symbolically written as f of x and y, because x and y are 2 independent variables. Here y is equal to f of x was only dependent of x, but it is f of x or y is dependent of both x and y both. So this is the explicit and implicit function. And finally we have parametric equations. So functions can be expressed in the parametric equation. Parametric equations are those equations which are dependent. If 2 or more functions depends on single variable, then these functions are called parametric equation. Here x is equal to 80 square, y is equal to 80 square. X is equal to 80, x is a function of t, y is a function of t. ठीक है, both are explicit function, so both are depends on t. So दो function मुख्तलिफ हैं जो एक ही variable पे depend कर रहे हैं, so both are the parametric. Here x is equal to a cos theta, y is equal to b cos theta. X is a function of theta, y is a function of theta. So both are functions like explicit function depends on single variable which is theta. So parametric equations are equations, 2 or more equations depend on single variable, then these equations are said to be parametric equations. So this is a fundamental thing. Another fundamental thing is to describe even function and odd function. If we replace
x by negative x in our function and function gives us no effect on the function, then the function is said to be even function. Like f of x is equal to x स्केयर. अगर x स्केयर के अंदर हम लोग x की जगह नेगेटिव x भी रिप्लेस कर दें तो ऊपर स्केयर होने की वजह से वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो उससे इफेक्ट नहीं होगा. सो f ऑफ नेगेटिव x भी x स्केयर ही रहेगा जैसा कि f ऑफ x था. सो f ऑफ x की भी वैल्यू वही है जो f ऑफ नेगेटिव f ऑफ x की है. सो बोथ की वैल्यू सेम है. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ इवन फंक्शन. अगर बोथ की वैल्यू सेम ना हो और वो अपना नेगेटिव बाहर निकाल दे, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x, लेट अस से दैट f ऑफ x लेट मी से इज इक्वल टू x. सो अगर हम लोग x की जगह नेगेटिव x रिप्लेस करते हैं तो f ऑफ नेगेटिव x जो बनेगा वो अपने आप में नेगेटिव x बन जाएगा. ये x तो f ऑफ x की वैल्यू थी तो इसकी जगह पर हम लोग f ऑफ x रिप्लेस कर देते हैं. सो f ऑफ नेगेटिव x आ गया आपके पास नेगेटिव f ऑफ x के. सो इसने नेगेटिव अपना बाहर निकाल दिया. अगर ऐसा फंक्शन जो नेगेटिव को बाहर निकाल दे, सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन. अगर कोई फंक्शन नेगेटिव को बाहर ना निकाल सके और वैसे का वैसे शो कर दे, सो दिस इज़ इवन फंक्शन. बट अगर कोई इस तरह का फंक्शन आ जाए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x. अब अगर आप नेगेटिव x रिप्लेस कर दो तो ये x स्क्वायर तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये x नेगेटिव रिप्लेस कर देगा. f ऑफ आपका ये जो लेट्स से वी हैव टू राइट ओवर 1 second. We have a rough page I have included over here. So if f of x is written as x square minus x and so अगर हम लोग f of x में x की जगह पर नेगेटिव x रिप्लेस कर दें, सो ये बनेगा नेगेटिव x का स्केयर माइनस इंटू माइनस एक्स. सो स्केयर होने की वजह से ये एक्स स्केयर तो हो गया पॉजिटिव, ये माइनस माइनस हो गया प्लस. सो एक्स स्केयर प्लस एक्स. सो ये ना तो आपका ये जो फंक्शन है ये ना तो आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही आपका एफ ऑफ नेगेटिव एक्स के इक्वल है. ठीक है. सो ये दोनों के इक्वल नहीं है फंक्शन. सो ऐसी सूरत हाल में ये ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है. सो दिस इज़ द रफ एग्जांपल फॉर नाइदर इवन एंड नॉर ऑड फंक्शन. सो यू नीड टू टेक दीज थिंग्स बाय ऑन योर ओन. सो दिस वाज द समथिंग वी हैव स्टडीड टुडे. So you need to know about it. Your homework is to define at least 5 examples of each function's type. You need to express an assignment for today, that you need to express at least 5 examples in each topic, like explicit, implicit, parametric, even function, odd function, at least 5 examples. So you also need to mention a real valued function and complex valued function, at least 5 examples. So this is your homework. Best of luck. Allah Hafiz.